Hello friends, in this video we will understand how to use can and be able to in the present and in the future. We'll also see what is the difference between these two. Let's understand the difference with examples. Can your team win the final match this weekend? यहाँ हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इस वीकेंड पे एक फाइनल मैच होगा, यानी फ्यूचर में एक काम होगा। क्या उस काम को आपकी टीम कर पाएगी या फिर कर सकती है? तो यहाँ पर कैन का जब यूज करते हैं, इसका मतलब है कि योर टीम हैज़ द एबिलिटी राइट नाउ, एट प्रेजेंट योर टीम हैज़ द एबिलिटी टू विन द मैच और नॉट. The person who is asking this question wants to know whether the team has the ability to win the match right now or not. Means we can use can in this way. If you have ability at present to do a future action, there we can use can for future. Okay, but the second sentence, will your team be able to win the final match this weekend, means the final match is going to be played this weekend, and the person who asked this question knows that the team does not have the ability to win at present, but he wants to know whether that team will get the ability in future to win the final. कहने का मतलब, क्या तुम्हारी टीम फाइनल मैच को जीत पाएगी? अभी तो तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं है, क्या आप फाइनल मैच जीतने के काबिल हो जाएंगे? क्या आप फाइनल मैच जीत पाएंगे? इन क्वेश्चंस का जवाब देने का प्रयास करें. यस, अवर टीम कैन विन द फाइनल मैच, मीन्स अवर टीम हैज़ द एबिलिटी राइट नाउ टू विन द फाइनल मैच. And the second question's answer, yes, my team will be able to win the final match, means we will do something, we will prepare ourselves and we will win the final somehow. Let's see these sentences. Can you play tennis by this weekend? This sentence is incorrect क्योंकि यहाँ हम कहना चाहते हैं क्या इस वीकेंड तक आप टेनिस खेल पाएंगे, क्या आपके अंदर टेनिस खेलने की एबिलिटी आ जाएगी. इस सेंस में हम कैन का यूज़ नहीं करते. फ्यूचर में किसी काम करने की एबिलिटी किसी के अंदर आ जाएगी, इसके लिए हम कैन का यूज़ नहीं करते, विल बी एबल टू का यूज़ करते हैं. विल यू बी एबल टू प्ले टेनिस बाय दिस वीकेंड? दिस इज करेक्ट सेंटेंस. नाउ लेट्स सी दीज sentences. Can you sing a song? Are you able to sing a song? Both these sentences mean the same. The first one is used in informal situations, while the second means be able to is used in formal situations. This is more common in formal situations. Okay, and if you think the video was helpful to you, please like, share and subscribe. Thanks for watching.